Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula, and today I'm going to share with you some of the activities that you can conduct in your classes for teaching fiber to fabric. Yes, journey from fiber to fabric for teaching your middle school students, my lovely educators. Here are the different activities for you. So, my dear educators, this is a chapter in sixth standard, seventh standard, where the children they are learning about fiber to fabric, the journey, right? So obviously you have to conduct some art integrated activities to make your classes engaging, enriching, and exciting. Also, you need to you see do some art integrated activities, art integrated projects as well. So let's see what all we can do with our students. So my dear educators, sustainable style from the ground up. Discover the world of eco-friendly fabrics and fashion. So you can organize a fashion show, you can organize a ramp walk in your school, in your class, where the students they can dress up using the dress is made up of different fabrics, right? So this is how you can you see how um, role play in the class, fashion show in the class, ramp walk in the class, where the children they will be able to showcase their dresses made up of different fibers and fabrics. So they'll be able to even explain like whether they have got the stuff ready made or they have got it tailor made as per their requirements. So I mean that will be really interactive session. Fashion and textile play a big role in our daily lives, but they also have a significant impact on the environment. By choosing eco-friendly fabrics such as organic cotton, bamboo, hemp, and recycled polyester, we can support sustainable fashion and reduce the environmental footprint. So, my dear educators, these fabrics, they are made up with less water, energy, chemicals than the traditional textiles and are often biodegradable or recyclable. Let's embrace the world of eco friendly fabrics and mark sustainable style a priority in our lives. Together, we can build a more sustainable and fashion industry from the ground up. Yes, my lovely educators, we can together. Now, paper, fiber, loom, band weaving activity. I also did the same. You can also conduct during maybe you see loom band making, use different kinds of loom. Children, they'll be able to get to know the technique of how to join different fibers, the various ways, right? So the same can be done. In market, looms are available. You can conduct that activity. You can ask your children if it is available at home. They can bring in this school and you can together conduct that activity, or maybe paper weaving activity using quilling strips. The same can be done, and with the different fibers again they can make their own friendship bands, or maybe on Raksha Bandhan some activities can be conducted. Start with a sample weaving project, very simple weaving project using the strips of paper. I have told you quilling strips, if not possible, the same can be cut using a scissors. You can cut different strips, otherwise they are very easily available in the market. I have got a quilling strip cutter as well. So I mean anything, if it is possible, the same can be done in any manner. Now show your students how to create a simple over under pattern, over under, you see weaving, they can make their own table mats, they can make their coasters to cover the glass of water in the classroom and the table mat when they are having their lunch during the meal break. This activity helps to build the foundation for more complex weaving projects. You can also conduct friendship band weaving activity on friendship day, as I've just shared with you. They can also weave coasters and table mats as per their choice. So डियर एजुकेटर्स, आप ऐसे एक्टिविटी क्लास में करा सकते हैं, बच्चों को वीविंग का पैटर्न समझ में आएगा, किस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है, कोस्टर बनाए जाते हैं, पेपर मैट बनाए जाते हैं, और भी उनके जो आइडियाज हैं, इवन दे कैन टॉक टू द ग्रैंड पेरेंट्स की वीविंग निटिंग कैसे किया जाता है. दे विल बी गेट टू नो द जर्नी फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक. In our last video, we talked about understanding different fibers, and this video we are talking about the journey from fiber to fabric. So my dear educators, cardboard loom weaving,
If I talk about cardboard loom weaving activity, use cardboard and a few simple materials to create a loom that your students can use for weaving. Encourage them to experiment with different fibers and textures as they create their own pieces of fabric. Cardboard can be used as a base, and their different fibers can be used overlapping over under pattern. The same can be done, and they can weave beautiful coasters, table mats, and anything they would like to make. They can even create beautiful photo frames as well. What not they can do. They can even make their pen stands also, right? So they can just weave outside with the help of some threads and all. So weaving with natural fibers. Take your students on a nature walk to collect natural fibers like grasses, leaves, twigs. Show them how to create a simple loom using a piece of cardboard or a tree branch. Then encourage them to weave their own pieces of fabric using the natural fibers they have found. So such activities can be conducted. Weaving with fabric strips. Collect a variety of fabric scraps and cut them into strips, right? बहुत सारे फैब्रिक के स्क्रैप हमारे पास अवेलेबल होते हैं घरों में, पुराने कपड़े होते हैं, किसी कपड़े में से कुछ बचा होता है, आसपास कोई टेलर है वहां से लेकर आ सकते हैं. Show your students how to create a simple loom using cardboard or a wooden frame, and then encourage them to weave their own pieces of fabric using fabric strips. So, my dear educators, use small looms like pot holder looms or bead looms to teach your students the basics of weaving. These small looms are easy to use and can create a variety of different patterns and textures, right? You can create your own looms, या looms available हैं, वो भी कर सकते हैं, अपने loom बना सकते हैं. Bead looms भी होते हैं कि उसके ऊपर रखकर आप beads बनाते हो, right? छोटी छोटी आप बैम्बू स्टिक्स लेकर उसके ऊपर जब वीव करते हैं तो एक अलग अलग तरीके के बीड्स बनते हैं. क्विलिंग स्ट्रिप्स को लेकर बीड्स बनाए जा सकते हैं, उससे ब्यूटीफुल इयररिंग्स बनाते हैं. आई हैव मेड लवली ज्वेलरी. यू कैन इवन विजिट माय पेज. आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो कि कैसे ब्यूटीफुल ज्वेलरी क्विलिंग से बना सकते हैं, वीविंग के साथ, निटिंग के साथ. और वो सब चीजें क्या है, दिस इज रिलेटेड टू वोकेशन, राइट? स्किल एजुकेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट circle weaving, use a simple embroidery hoop to create a circular loom that students can use for weaving. Encourage them to experiment with different fibers and texture as they create their own circular pieces of fabric. So use what you have to. So circle weaving, if I talk about, use embroidery hoop. एम्ब्रॉयडरी का जो हुप आता है उसको आप उसे सर्कुलर जो लूम है वो क्रिएट किया जा सकता है. एंड द स्टूडेंट्स दे कैन यूज इट फॉर वीविंग. एनकरेज देम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फाइबर्स. वो अलग अलग फाइबर लेके उसको जो है एज अ बेस बनाकर उसकी जो फैब्रिक है वो उसमें से बना सकते हैं. लाइक व्हाट ऑल एक्टिविटीज वी कैन डू. Tapestry weaving can be done, as you can see in the image also. Teach your students the art of tapestry weaving, which involves creating images and patterns using different colored yarns. अलग अलग रंगों के जो yarn हैं वो लेकर उसके through encourage them to experiment with different fibers and textures as they create their own tapestries. अपनी tapestries बनाएंगे, right? अलग अलग weaving आपके pattern के through they'll be able to do the same. Weaving with recycled material. Challenge your students to create their own pieces of fabric using recycled material like plastic bag, t-shirt, old cassette tapes if they are available. Encourage them to experiment with different textures and patterns as they weave. अलग अलग तरीके के पैटर्न बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली because they are very creative. Talking about collaborative weaving project, have your students work together to create a large scale weaving project, assign different sections to different groups of the individuals and then combine the sections together to create a collaborative piece of fabric. हर एक ग्रुप का जो आपने क्लास में 5-5 के बच्चों, 6-6 बच्चों में जैसे एक ग्रुप बना दिए. हर एक ग्रुप क्या कर रहा है कि एक प्रोजेक्ट उनको दिया है आपने. हर एक ग्रुप एक छोटा छोटा पीस अपना बना रहा है. वो छोटे छोटे आर्ट पीस को लेकर टुगेदर मिलकर एक बड़ा आर्ट पीस, एक मैट अपनी क्लासरूम के लिए बना सकते हैं कि क्लासरूम के कॉर्नर में स्टोरी टाइम एक्टिविटी के लिए एक एक अगर जो पैच बनाए उस पैच को जोड़कर एक बड़ा पैच बनाया जा सकता है मैट. उसी के ऊपर बैठकर स्टूडेंट्स दे विल हैव देयर स्टोरी टाइम, सर्कल टाइम एक्टिविटी इन द क्लास. सो द सेम कैन बी डन. और क्या कर सकते हैं हम इसमें.
वीविंग विद साउंड, इनकॉर्पोरेट म्यूजिक, म्यूजिक का जब इंटीग्रेशन करेंगे विद अदर साउंड एलिमेंट्स इनटू योर वीविंग प्रोजेक्ट. एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू वीव इनटू रिस्पॉन्स टू द साउंड्स दे हियर or create their own sounds as they weave. This activity can help to foster creativity and experimentation in the weaving process. बहुत पहले एक हमारे स्टूडेंट्स ने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. यहाँ पर भी मैंने एक ऐसे एक्टिविटी इवन मेंशन किया है, किसी और चैप्टर में आएगा, कि आप म्यूजिक को सुनकर आप पेंट कर रहे हो. जैसे म्यूजिक फास्ट हो रहा है तो आप फास्ट फास्ट अपने ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो चला रहे हो. म्यूजिक स्लो हो रहा है तो स्लो स्लो कर रहे हो. तो देन यू हैव टू सी कि कैसा वो ब्यूटीफुल पिक्चर बन के आ रहा है, उसका अफेक्ट आपसे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑटोमेटिकली हम अपने आप को उसके साथ लिंक कर लेते हैं. तो ऐसे ही वीविंग के लिए भी आप म्यूजिक के साथ इंटीग्रेट करके कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हो कि कहाँ पे फास्ट करना है, कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे इस म्यूजिक पे क्या आपको स्टेप लेना है, उस म्यूजिक पे आपको क्या करना है, ओवर है, अंडर है, राइट. जो वीविंग या निटिंग के अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसको इसके साथ को रिलेट करके भी कर सकते हैं. अगला है फाइबर आइडेंटिफिकेशन लैब. अगर आपके आसपास कोई ऐसी लैब है, डू प्लान अ विजिट. Take your students there if it is possible, right, so that they'll be able to understand the different properties of the different kinds of fibers. Next, गांधी जी का चरखा, स्पिनिंग व्हील. इसके लिए क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फाइबर्स इनटू yarn यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील. अगर पॉसिबल है जरूर लेके जाइए, दिखाइए. स्कूल में अगर है एक डम्मी चरखा, वो लेकर आ सकते हैं. एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू ट्राई स्पिनिंग या देमसेल्व्स. डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइबर्स दे यूज. कौन कौन सी फाइबर्स को यूज कर रहे हैं, स्पिनिंग कैसे हो रही है, वीडियो उनको दिखाया जा सकता है. हम बात भी कर सकते हैं, वन टॉक अबाउट आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, हिज चरखा, खादी के बारे में बात कर सकते हैं. दिस वुड बी ग्रेट सब्जेक्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी. एंड यू नो एज अ स्किल सब्जेक्ट ऑल्सो इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 6 to 8 स्टैंडर्ड. खादी अब 2-3 दिन पहले ही वीडियो भी आया है ऑन अ स्किल module, right, that is already there on the CBSE YouTube channel skill unit, so you can watch that also related to khadi. Now, weaving workshop, you can conduct weaving workshop in your class. If I talk about APSA, that is Association of Parent Participation in the School Activities, under that you may invite some of the parents, those who can conduct weaving workshop in the class, right? किसी बाहर से गेस्ट लेक्चर को बुलाना है वो भी कर सकते हैं. आप में से कोई टीचर वॉलंटियर आगे आकर बताना चाहता है हाउ द वीविंग इज टू बी डन, द सेम कैन आल्सो बी डन. पर ये करवा सकते हैं. आई मीन देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन, इसमें से जो भी आपके मन को भाए, जो भी आपके मन को छुए एक्टिविटी, आप वो एक्टिविटी अपनी क्लास में बच्चों के लिए जरूर कराइए. नाउ डाइंग एक्सपेरिमेंट, या तो मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप लोकल डायर के पास भी लेकर जा सकते हैं जो क्लोथ्स डाई करता है. एक विजिट प्लान कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको क्या कठिनाइयां आती हैं जब एक लोग आते हैं कपड़ा लेकर कि इसका रंग उतार कर भैया दूसरा इसके ऊपर कलर चढ़ा दो. तो वो उसको करने के लिए उसको क्या प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें से कलर उतरता है कि नहीं उतरता है, बहुत बार जो शेड उसको करना है एग्जैक्ट नहीं वो मैच हो पाता है. तो these sort of questions, the interview questions, they can be planned. This you can conduct, you can take your students over there. Classroom में tie and dye if it is possible. In the lab, chemistry lab में जाकर या कहीं composite lab में वो करना है तो that can also be done, right? As I have mentioned here कि सदर बाजार में ले जाकर, लोकल मार्केट में ले जाकर डायर के साथ इंटरव्यू भी करवाया जा सकता है. फैब्रिक प्रिंटिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं. हैव योर स्टूडेंट्स क्रिएट देयर ओन फैब्रिक प्रिंट्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ प्रिंटिंग टेक्निक्स. एनकरेज देम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फाइबर्स एंड टेक्सचर्स एंड डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स दे प्रिंट ऑन. ये क्या है उनका DIY, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट भी करवा सकते हैं कि अपने अपने फैब्रिक को आप प्रिंट करके लाइए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रिंट एज पर देयर चॉइस, द सेम कैन बी डन, राइट. अपने किसी और थीम से रिलेटेड कर सकते हैं, आपके लैंग्वेजेस में कोई टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कर सकते हैं कि लैंग्वेज का एक टॉपिक है जैसे रिलेटेड बच्चों को इलस्ट्रेशन कोई बनाना है और आपने बोला कि आप फैब्रिक को प्रिंट करिए, तो साइंस और आर्ट और आपका लैंग्वेज का पूरा टोटल इंटीग्रेशन हो गया कि दे आर प्रेजेंटिंग देयर लर्निंग ओवर दैट. फील्ड ट्रिप प्लान कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई टेक्सटाइल मिल है वहां पर बच्चों को लेके जा सकते हैं ताकि उनको जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके से फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. मैंने देखी है बचपन में छोटे होते हुए, राइट, हमारे विलेज में एक होता था जहाँ पर ये इस तरीके से वीविंग लूम के थ्रू ये कन्वर्ट किया जाता था. आई हैव सीन, राइट. तो आप अगर आसपास है तो जरूर लेकर जाइए बच्चों को. फैब्रिक कंस्ट्रक्शन चैलेंज कर सकते हैं. यू कैन चैलेंज योर स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन पीस ऑफ फैब्रिक यूजिंग वैरायटी ऑफ फाइबर्स. अलग अलग फाइबर्स लेके एक ब्यूटीफुल जो है आर्ट पीस वो क्रिएट कर सकते हैं. दे कैन कम अप देयर ओन आर्टिफैक्ट्स. एनकरेज देम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स एंड डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइबर्स दे हैव यूज्ड. हर फाइबर की क्या प्रॉपर्टी है,
क्या ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, या ये वाटर रेजिस्टेंस है, गीली होती है, बहुत जल्दी सूख जाती है, क्या है? तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट ऑल इज देयर इन द सिलेबस एज वेल. चलिए, और आगे क्या कर सकते हैं? नेचुरल फाइबर स्कैवेंजर हंट कर सकते हैं. व्हाट इज इन माय वार्डरोब, मेरी अलमीरा में क्या है? हैव योर स्टूडेंट्स गोन अ स्कैवेंजर हंट टू फाइंड द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स. आपकी कबर्ड में कौन कौन सी नेचुरल फाइबर्स प्रेजेंट हैं? हाउ दे आर यूज इन द फैब्रिक मेकिंग प्रोसेस. आई मीन मेरे अलमीरा में जो जो कपड़े हैं, मैंने उसमें कॉटन है, नेचुरल फाइबर्स हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ज्यादा क्या है, मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, तो दे कैन हैव अ चेक ऑन दैट. तो ये एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है. और इसके अलावा फैब्रिक आर्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं. यू कैन आस्क योर स्टूडेंट्स टू क्रिएट एन आर्ट प्रोजेक्ट यूजिंग डिफरेंट फैब्रिक्स एंड टेक्निक्स. Encourage them to experiment with different fibers and textures and discuss the properties of different fabrics they have used. एक प्रोजेक्ट अपना पूरा प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग फाइबर्स, फैब्रिक्स के जो पीसेस हैं, स्वॉशेस हैं, वो कट करके उसको लगा सकते हैं. घर में कहीं मिल रहे हैं, ओल्ड क्लोथ से मिल रहे हैं, टेलर की शॉप से लेकर आ रहे हैं, कहाँ से उनको मिल रहे हैं, तो वो उसको कलेक्ट कर सकते हैं. फैशन डिजाइन का प्रोजेक्ट कर सकते हैं. चैलेंज योर स्टूडेंट्स टू डिजाइन देयर ओन पीसेस ऑफ क्लोथिंग यूजिंग डिफरेंट फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. एनकरेज देम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स एंड डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइबर्स दे हैव यूज्ड. इसमें peer tutoring एक्टिविटी कर सकते हैं that can be planned wherein the home science lab students they will be teaching the junior students कि कैसे उनको वो अपने अलग अलग क्लोथ्स, अलग अलग वो कॉस्ट्यूम्स वो डिजाइन करते हैं इन द फैशन लैब. तो peer tutoring बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है अगर आपके स्कूल में 11th एंड 12th में फैशन स्टडीज है तो you can conduct this. Now, rhyme time. From fluffy cotton to silky hair, the journey of fibers is everywhere. Like अलग अलग तरीके के fibers हैं. From plant to animal and beyond, fiber to fabric, a bond so fond. Right? हम winter में कैसे कपड़े पहनते हैं? वूल कहाँ से मिलता है? राइट? एनिमल से हमें जैसे सिल्क है, आप अपना जो एनिमल से हमें फाइबर्स मिलते हैं या प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं, कॉटन की बात होती है, हेम्प है, जूट है, तो अलग अलग फाइबर्स के बारे में बात करके यू कैन हैव डिस्कशन ऑन दैट कि हमारे लिए क्या अच्छा है. जूट एंड हेम्प, अ प्लांट सो स्टर्डी, अ फाइबर सो स्ट्रॉन्ग इट्स नॉट अ वर्डी. फ्रॉम रोप्स टू द बास्केट्स एंड मैट्स टू बैग्स, जूट एंड हेम्प, अ फाइबर सो क्रैग्स. तो यहाँ पे डिफरेंट फाइबर्स की बात हो रही है. यू कैन टॉक अबाउट दैट. वूल एंड फर एंड एनिमल्स प्राइड, अ फाइबर सो वार्म इट्स हार्ड टू हाइड. विंटर में कैसी फाइबर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रॉम स्वेटर्स टू ब्लैंकेट्स एंड हैट्स टू सॉक्स, वूल एंड फर आर फाइबर दैट रॉक्स. राइट? अगर ये सब ना हो, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट दीज काइंड्स ऑफ फाइबर्स. मतलब देखिए आप क्रिएटिवली बच्चे दे विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ देयर आंसर्स लाइक ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स. So let us celebrate the fiber so fine, a source of comfort, a pleasure to dine. From fiber to fabric, a story to weave, a tale so enchanting is hard to leave. So conduct such activities. You can ask your students to come up their own rhymes, own poems also, own experience sharing also, their visit to a textile mill, their visit to a dyer, local dyer in the Sadar Bazaar. I mean, such kinds of activities they can be conducted. If you want to know more, क्या करना है? बस थोड़े से simple से step है. Subscribe to my channel. Like the videos, share the same in your community. और आपके कोई सवाल हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, आपके कोई suggestions हो, don't forget to share them in the comment section below. Thank you. Have a nice day.